Childhood is an enchanting vista, endless fun, a joyful classroom, an era of imagination. Nurture the child within you. Have fun. Be wild. Be a child. Jump, play, take a ride. And yes, keep that phone aside. Give your loved and near ones your precious time. Have fun. Enjoy this day your way. Wishing you a very happy Children's Day. Not just me, we have the complete group of teachers, not teachers, some special children who have come to wish you on your special day and make it even more special. Let us have a look at these. And yes, keep guessing who these are. Wishing you a very happy Children's Day. Childhood memories are the sweetest and they can be severed for lifetime. And our Children's Day memories are best of those. On this Children's Day, 14th November 2020, we celebrate 131st birth anniversary of our first Prime Minister, beloved Chacha Nehru. This and many more interesting facts we will come to know in the upcoming presentation on importance of Children's Day. My dear students, I wish you all a very happy Children's Day. This day is celebrated to raise awareness for the rights, care, and education of the children. Children are the future of the country, no doubt. The children are the God's gift to the society. They are always innocent, admirable, and lovable. Do you know International Children's Day is celebrated on 28th of November worldwide. After India's independence and up to the year 1964, the Children's Day was celebrated on
28th of November, according to the guidelines of the United Nations. After the death of Pandit Jawaharlal Nehru in 1964, the Children's Day celebration was changed from 28th November to 14th November, as it falls on the birth anniversary of Nehru. India started celebrating Children's Day on 14th of November every year. Children's Day is popularly known as Bal Divas. Therefore, the deep love and the enthusiasm of Chacha Nehru towards the children is the big reason for celebrating the Children's Day at his birth anniversary. Children's Day is celebrated in India in various ways through the cultural and the fun activities, which are organized in educational institutes, offices, and in various organizations. Government and the non-government organizations, schools, NGOs, private bodies also celebrate with orphans and unprivileged children. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14th November in 1889. He was the first Prime Minister of India and ruled the country for the longest period. He was a great follower of peace and prosperity and popularly known as Chacha Nehru. Nehruji was fond of red roses, which appeared always in his pocket. Jawaharlal Nehru also loved children and he always liked to be in the middle of them. He worked for better education, progress, well-being and welfare of the children as well as for the youngsters in India. He established various educational institutions in India like IITs, IIMs and AIIMS. Nehru also introduced free primary education and free meals to the school children to prevent malnutrition. Children should be carefully and lovingly nurtured as they are the future of the nation. They are the strength of the country and the foundation of the society. By the right education and care, we can give them a new life as they are the world's next leaders. The whole society should think about its duty and the responsibility towards the children. It is necessary to analyze what has been done in the past and what can be done in the years ahead for the children. At last, I would like to say, if you carry your childhood with you, you will never become older. I wish you a very happy Children's Day. Thank you. पाहिलेत इम्पॉर्टन्स ऑफ द डे. तर चला तर मग वळूयात पुढच्या कार्यक्रमात. बालदिनाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आज कोणीतरी एक खास आलेला आहे. कोण बरे ते मी सांगण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्षच बघूया. चला तर. हाय. अरे असे काय आश्चर्याने बघताय? हो हो मीच तुमची लाडकी शाळा. आज बालदिन, चिल्ड्रन्स डे, तुमचा दिवस. तुम्ही मला भेटायला येऊ शकत नाही. म्हटलं आपणच जाऊ तुम्हा सगळ्यांना भेटायला. अरे 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 बसमधून उतरण्याची काय ती गडबड. बाप रे उशीर झाला वाटतं. आता काय कारण सांगावं बरं टीचरला. ही आपल्या शाळेची घंटा. कधी तास संपण्याची वाट तर कधी तास संपूच नाही असं वाटणारी. मी एकटी नाही हा आले तुमच्या भेटीला. या सगळ्या लाभ पाहिल्यात. नवनिर्मितीचा आनंद जिथे मिळतो, शिकण्यातली मजा जिथे घेता येते, अवघड गोष्टी शिक्षकांनी सोप्या करून सांगितल्यावर मग त्यानंतर होणारा आनंद विचारूच नका. ही बघा डान्स रूम, म्युझिक रूम आणि ही आर्ट रूम. कला निर्मितीचा आनंद देणाऱ्या या सगळ्या खोल्या. कम्प्युटर लॅब तर सगळ्यांची आवडतीच. तसंच आणखीन एक आवडतं ठिकाण आपल्या सगळ्यांचं ते म्हणजे शाळेची लायब्ररी.
जिथं पुस्तकांबरोबर चालणारे कार्यक्रम, स्पर्धा, सॉफ्ट स्किलचे क्लिप्स, संभाषणं, गेस्ट लेक्चर या सगळ्याची रेलचेल इथे चालते. बास्केटबॉलसाठी पीईच्या तासाची वाट किंवा टीचर्सना ऑफ पिरियड देण्याचा आग्रह. शाळेच्या ग्राउंडवर कबड्डी, व्हॉलीबॉल, रनिंगची प्रॅक्टिस, सकाळचा स्पोर्ट्स क्लब. आठवलं हे सगळं? बाळांनो, हे सगळं पाहून आपल्या प्रत्यक्ष भेटीची उत्सुकता लागली आहे, हो ना? हो, आपण सगळे प्रत्यक्ष लवकरच भेटूया. माझ्या सहवासाचा आनंद तुम्ही घ्या आणि मला पण तुमच्या सहवासाचा आनंद द्या. तोपर्यंत मात्र काळजी घ्या, सुरक्षित राहा. बाय बाय. My dear children, I am truly delighted to welcome all of you to our slideshow. Today is a very special day for all of us. Every honest child is a brave child. Every hard-working child is a brave child. Every child who can show others the right path is a brave child. So the National Bravery Awards programs gives due recognition to children who distinguish themselves by performing outstanding deeds of bravery and seeks to inspire other children to emulate their example. The deed should be an act of spontaneous selfless service in the face of risk to life or threat of physical injury, and or an act of courage and daring against a social evil or crime. On February 4th, 1958, the then Prime Minister Nehru presented the very first awards for courage and service to 2 children. Since then, Indian Council for Child Welfare (ICCW) confers national awards on children every year. The details of the awards, the National Bravery Awards, consist of 5 categories, which are the first, the Bharat Award; second, the Geeta Chopra Award; third, the Sanjay Chopra Award; fourth, the Bapu Gaidhani Award; fifth, the General National Bravery Award. Now, the process of applying. Nominations are received in the prescribed application form, which can be obtained from ICCW office, New Delhi. The application should be recommended by 2 of the listed competent authorities. The form is to be accompanied by the following. First, a write-up of about 250 words giving the details of the deed performed by the applicant or a child. A proof of a date of birth, newspaper, magazine clippings, and or the first information report (FIR) or police diary filed with the police station. The account of the incident as well as the supporting documents should preferably be endorsed by 2 of the following competent authorities: principal or headmaster of school in which the applicant is studying, or the head of a panchayat, or a Zilla Parishad General Secretary, or the President of the State Council for Child Welfare, or a collector, or a district magistrate, or a government official of equivalent rank, or SP, we can call Superintendent of Police of the area, or police official of higher rank. Now, the age limit, the child should not be below 6 years and above 18 years of age on the date of the incident. Then the date of incident which we have occurred July 1 of the previous year and June 30th of the present year are considered for the present year awards. The selection committee may at its discretion relax the date by a maximum period of 3 months prior to July 1. Last date of submission of application is September 30th. Now the comes ceremony. The awards are usually announced on 14th November, a Children's Day, or in January the following year, and later presented by the Prime Minister on the eve of the Republic Day. And prior to this, the President hosts a reception in their honor, where the children meet the media. On 26 Jan, the awardees take part in the Republic Day parade at Rajpath, New Delhi. The awards. The awardee receive a medal, a certificate, and a cash award. Gifts are given by philanthropic organization. What are the additional benefits? Now let us see the additional benefits. Eligible awardees are granted assistance until they complete their schooling. The Government of India has reserved some seats for the awardee in medical and engineering college and polytechnic. Now here is
the list of award winners. Muhammad Moisin. Now, the 16-year-old boy hailing from the Kerala's Kozhikode district drowned while attempting to save three of his friends from the rough sea in April last year. He has been chosen posthumously for the ICCW Abhimanyu Award. Aditya K, another 15-year-old Kerala resident, was conferred with the Bharat Award after he saved more than 40 lives when a bus they were traveling in caught fire in Nepal in May 2019. Aditya later told media persons that he eventually wants to join the Indian Air Force. The next, Sartaj Mohiuddin Mughal and Mudassir Ashraf, two youths from Jammu Kashmir, from Kupwara and Budgam, respectively, were awarded for performing acts of valor in the former state last year. Ashraf attempted to save Kifayat Hussain, who caught fire when IF's Mi-17 helicopter crashed in Budgam in February 2019. Caroline Masala Mutsulongi resides in Mizoram. The girl has been conferred from the Gallantry Award for her presence of mind that saved a kid from being kidnapped. Kamal Krishna Das. In September 2018, Das jumped into the flooded Brahmaputra river in Assam to save his mother, aunt and stranger. Rakhi. The ICCW Markandeya Award was given to 10 years old Rakhi hailing from Uttarakhand. He saved her 4-year-old brother from being attacked by a leopard. She sustained severe injuries in the act. The last one, the Srimati Badra, the 10 years old Badra was awarded the ICCW Prahalada Award as she saved her friend who lost her right leg and nearly lost her life on railway tracks in November 2018. The National Bravery Award are a set of awards given annually to about 25 Indian children below 16 years of age. The meritorious acts of bravery against all awards. There are many aspects to bravery. Bravery is not just about fighting a bad people. Bravery is not just about saving a person. Bravery is also about telling the truth and facing the consequences of doing so. Bravery is about working hard to be able to stand on your feet. In the world we live, simple honesty can also be an act of a great bravery. Many times we are tempted to do wrong things. Many times we are tempted to tell lies. Many times we are tempted to be lazy and make others work for us. But when we resist such temptation, we are being brave. It takes courage to be honest, diligent, and self-reliant. It's your courage that will shape our future. So be bold, be courageous, be creative, be enterprising, be adventurous, and be brave. I wish you all the bright and happy future. Jai Hind, Jai Bharat. आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अभी आपने देखा कि कैसे कुछ बच्चे लोगों के काम आए, अपनी बहादुरी से अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के काम आए और पुरस्कार के हकदार भी हुए। बहादुरी के इस मंजर के बाद आइए अब आपको ले चलते हैं एक कवि सम्मेलन। आज आपके शिक्षक कवि बनकर आपका मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा भी लगेगा और हंसाएगा भी। तो आइए चलते हैं कवि सम्मेलन में। प्रस्तुत कवि सम्मेलन किसी तरह की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता है। तात्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए इसमें आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रस्तुत सभी कविताएं कहीं से उधार नहीं ली गई हैं, बल्कि हमारी ही एक अध्यापिका श्रीमती कुंजन विश्वास की रचनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं कवि सम्मेलन। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कवियत्री सुरेखा जी। नमस्कार बच्चों, मेरी आज की कविता उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है
जो इतने मासूम होते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा संकट आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो सबसे प्रिय होते हैं उनके मम्मी और पापा। इस साल जहां सारी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं ये छोटे बच्चे बस इसी बात से खुश हैं कि वे अपने मम्मी पापा के साथ हैं और स्कूल से एक लंबी छुट्टी मिल गई है। तो सुनिए, दूर देश के वुहान शहर से कोरोना आंटी आई, आते से ही अपने से संग वो कितनी खुशियां लाई। उनके आने से ही मिल गई सबको लंबी छुट्टी, सेहत को संभाले रखने की एक नई गुत्थी। घर बन गया स्कूल और ऑफिस, कहीं ना आने जाने की झंझट। अब तो 3 घंटे में ही स्कूल निपट जाए फटाफट। सुबह सुबह की भागम भाग से मिल गया जैसे छुटकारा। लैपटॉप के एक स्विच में सिमट गया स्कूल सारा। मम्मी भी अब अच्छे अच्छे रोज बनाए व्यंजन, पापा भी अब थोड़े थोड़े धोते घर के बर्तन। दादा दादी भी अब हमसे बहुत खुश है रहते, मॉल्स मूवीज रेस्टोरेंट में पैसे अब नहीं बहते। टीचर के भी अब तो होते स्क्रीन पर ही दर्शन। इसी वजह से आजकल हम में होती है कम अनबन। सबको घर में एक साथ पाकर मिल गई बहुत खुशी। कोरोना आंटी सचमुच कहूं, ग्रेट हो जी तुसी, ग्रेट हो जी तुसी। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सुरेखा जी, बहुत अच्छे। तो बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं दूसरी कविता की ओर, उन थोड़े से बड़े बच्चों की ओर जो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही होशियार है। अब मैं कवियत्री अंजलि जी यानी अपने आप को आमंत्रित करती हूँ। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और कविता का शीर्षक है हमारे ऑनलाइन बहाने। गौर से सुनिए, हमारे ऑनलाइन बहाने। आप बच्चों, जब स्कूल शुरू था तब भी आपके पास बहुत बहाने थे, होमवर्क ना करने के, लेट आने के, यूनिफॉर्म ना पहनने के, वगैरह वगैरह। और अब जब ऑनलाइन स्कूल शुरू हुआ तब भी आपके पास बहुत बहाने हैं, बस बहाने बदल गए हैं। तो आपके ही कुछ चुने हुए बहाने मैं आपको सुनाती हूँ। सुबह उठ के तैयार होके जब मैं लॉगिन करती हूँ, 4-5 बच्चों को देख मैं तो आग बबूला हो जाती हूँ। 10 मिनट बाद धीरे धीरे एक एक आ जाते हैं और आते ही अलग अलग बहाने ये बनाते हैं। एक बोला मैडम जी मेरे घर में नहीं थी बिजली, तो दूसरा बोला मैडम आज तबीयत कुछ है ढीली, आज तबीयत कुछ है ढीली। एक बोला मैडम आज खराब है घर का नेटवर्क, तो दूसरा बोला कैसे आता, कितना दिया था होमवर्क, तो दूसरा बोला कैसे आता, कितना दिया था होमवर्क। एक बोला मैडम मेरे वीडियो में है समस्या, इसीलिए आज स्क्रीन पर आपको दिन में दिखेगी अमावस्या। एक बोला मैडम मेरा माइक नहीं है चलता, तो दूसरा बोला फोन खराब था तो फिर मैं क्या करता। जब सिखाओ तो ये बच्चे चिटचैट है करते, जब सिखाओ तो ये बच्चे चिटचैट है करते, कुछ पूछो तो जवाब देने में नहीं किसी से डरते, कुछ पूछो तो जवाब देने में नहीं किसी से डरते। यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो तुम, एक को मैंने पूछा, एक को मैंने पूछा यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो तुम। देखिए क्या सुंदर उत्तर उसने 1 मिनट में सोचा, देखिए क्या सुंदर उत्तर उसने 1 मिनट में सोचा। एक बोला क्या करे मैडम यूनिफॉर्म हो गया है छोटा, एक बोला क्या करे मैडम यूनिफॉर्म हो गया है छोटा। कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं हो गया मोटा, कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं हो गया मोटा। सवाल पूछने पर तो भाई अफरा तफरी मच जाती है, सवाल पूछने पर तो भाई अफरा तफरी मच जाती है। सो एंड सो हैज लेफ्ट द मीटिंग, यही स्क्रीन दिखाती है, यही स्क्रीन दिखाती है।
धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरी कविता जरूर पसंद आई होगी। अब मैं आपके सामने बचपन की एक कविता पेश करने के लिए कवियत्री रीटा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे समस्त प्यारे बच्चों और यहाँ पर बैठे सभी मित्रगणों को बाल दिवस एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं अपने बचपन में और सुनते हैं ये कविता बचपन। ये बड़े लोग भी हमको कोरी शान दिखाते हैं, ये बड़े लोग भी हमको कोरी शान दिखाते हैं। आता जाता कुछ भी नहीं पर बच्चों को समझाते हैं। कभी कहते बड़े हुए तो कुछ तो अपनी अक्ल लगाओ, कभी कहते बड़े हुए तो कुछ तो अपनी अक्ल लगाओ, कभी कहते छोटे हो तो चलो यहाँ से भाग जाओ, कभी कहते किचन में आकर थोड़ा थोड़ा हाथ बटाओ, और कभी कहते क्या कर रहे हो, मेरा काम इतना मत बढ़ाओ। कभी ये कहते खेल कूद से, कभी ये कहते खेल कूद से होता तन मन स्वस्थ, और कभी पूछते पढ़ना नहीं क्या, कब तक खेलोगे मस्त। कभी ये कहते मोबाइल मत देखो, कभी ये कहते मोबाइल मत देखो आंखें खराब होंगी, और कभी ये कहते मोबाइल ऑन करो टीचर आती ही होंगी। अरे बाहर जाने पर भी इनके इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं होते, क्या बताऊं, बाहर जाने पर भी इनके इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं होते। एक चीज को बार बार कहकर हमको सदा रुलाते। कभी खुशी में बोले बेटा, कभी खुशी में बोले बेटा मांग लो जो चाहिए, और कभी खराब रिजल्ट देखकर बोले डंडा लेते आइए। हम बच्चों पर भैया कितना होता है सितम, कितना हम बच्चों पर भैया होता है सितम। कब हम होंगे बड़ों से बड़े और बचपन होगा खत्म, कब हम होंगे बड़ों से बड़े और बचपन होगा खत्म। नमस्कार। धन्यवाद। सही में आपने बचपन की याद दिला। आता हिंदीकडून जाऊया मराठीकडे। आता मी आमंत्रित करते कवयित्री कुंजन विश्वास यांना, त्यांनी आपल्या समोर आपली रचना सादर करावी। नमस्कार मित्रांनो, आतापर्यंत आपण 2 वेगवेगळ्या गटातील मुलांबद्दल कविता ऐकल्या। आता मी जरा अजून मोठ्या ग्रुपकडे जात आहे, तो म्हणजे 9th आणि 10th चा, शाळेतील सर्वात मोठे आणि सर्वात हुशार अशा मुलांकडे। या लॉकडाऊनने सगळ्यांनाच प्रचंड त्रास दिला होता। आता तर अनलॉक सुरू झाला आहे, पण मार्च ते जुलै हा कठीण काळ ज्या मुलांनी सोसला आणि शाळेपेक्षाही ज्यांनी आपल्या फ्रेंड्सला मिस केले त्यांच्याच बद्दलची ही कविता आहे। कधी संपेल हे लॉकडाऊन, कधी आपली होईल भेट, कधी संपेल हे लॉकडाऊन, कधी आपली होईल भेट, कधी बघू एकमेकांना विदाउट युजिंग नेट। शाळेत जरा लेक्चर मध्ये बोलता तरी यायचे, शाळेत जरा लेक्चर मध्ये बोलता तरी यायचे, सगळ्यांकडून नोट्स घेऊन आपले तेवढे भागायचे। प्रत्यक्ष रोज भेटण्यात मज्जा वेगळीच यायची, प्रत्यक्ष रोज भेटण्यात मज्जा वेगळीच यायची। ग्राउंडवरची गंमत जम्मत कशी काय विसरायची, ग्राउंडवरची गंमत जम्मत कशी काय विसरायची। टीचर नसल्या क्लासमध्ये की रंगायच्या मस्त गप्पा, टीचर नसल्या क्लासमध्ये की रंगायच्या मस्त गप्पा। आता मात्र रामायण महाभारत बघतो मी, मम्मी आणि पप्पा। ग्रुप स्टडीच्या नावाखाली मस्त व्हायचा टाइमपास, ग्रुप स्टडीच्या नावाखाली मस्त व्हायचा टाइमपास। आता या ऑनलाईन सेशन मध्ये काहीच वाटत नाही खास, आता या ऑनलाईन सेशन मध्ये काहीच वाटत नाही खास। हॉटेल मधले पदार्थ नुसते आठवतच राहावे, हॉटेल मधले पदार्थ नुसते आठवतच राहावे। घरच्या भाज्या बघून वाटते हे खावे की गिळावे, घरच्या भाज्या बघून वाटते हे खावे की गिळावे। खरं तर शाळेत जायचे चांगलेच चालले होते रुटीन, खरं तर शाळेत जायचे चांगलेच चालले होते रुटीन। ह्या कोरोना व्हायरसनी चेंज केली सगळी सेटिंग। बोर झालो आहे मी, पबजीची पण सुटली साथ, खूप कंटाळा आला आहे बसून घराच्या आत। अशा अजून बऱ्याच व्यथा, अशा अजून बऱ्याच व्यथा सांगू काय काय,
अहो कोणीतरी या कोरोनावर शोधून काढा उपाय. कोणीतरी या कोरोनावर शोधून काढा उपाय, शोधून काढा उपाय. धन्यवाद. खरंच खूप छान. सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेची नक्कीच आठवण आली असणार आहे आणि सगळेजण देवाकडे नक्की प्रार्थना करतील की शाळा कधी सुरू होईल. आता मी आमंत्रित करते कवी मारुती पाटील यांना. बघूया ते आपल्याला काय ऐकवतात. नमस्कार मुलांनो, आज ऐकवतो मी पण 2-4 ओळी. नमस्कार मुलांनो, आज ऐकवतो मी पण 2-4 ओळी. तुमच्याशी जमली आज सगळ्या कवींची टोळी. तुमच्यासाठी जमली आज सगळ्या कवींची टोळी. तसा माझा संपर्क आहे मैदानाशी, तसा माझा संपर्क आहे मैदानाशी, तरी जबाबदारी उचलतो तुम्हाला हसवण्याची. सांगतो मी गोष्ट तुम्हाला एका सुंदर नाटकाची, सांगतो मी गोष्ट तुम्हाला एका सुंदर नाटकाची, महाराजांच्या आयुष्यावर रंगलेल्या रंगमंचाची. होती सगळी मुले लहान, होती सगळी मुले लहान, छान चालली होती ऍक्टिंग. होती सगळी मुले लहान, छान चालली होती ऍक्टिंग. तेवढ्यात झाले काय समजेना, ऑडियन्सची सुरू झाली लाफिंग. तेवढ्यात झाले काय समजेना, ऑडियन्सची सुरू झाली लाफिंग. डोळे चमकून बघितले तेव्हा हसू मलाही फुटले. डोळे चमकून बघितले तेव्हा हसू मलाही फुटले. शेलार मामा चक्क स्टेजवर चष्मा घालून आले. शेलार मामा चक्क स्टेजवर चष्मा घालून आले. अफजल खानाची ती नकली दाढी गेली पडून, अफजल खानाची ती नकली दाढीच गेली पडून. सईबाईंची नथ हरवली, वेणी गेली सुटून. आग्र्याच्या सीनमध्ये तर पेट्या आल्याच नाहीत. आग्र्याच्या सीनमध्ये तर पेट्याच आल्या नाहीत. महाराज आणि संभाजींना कळले नाही काही. स्टेज मागे गडबड गोंधळ, स्टेज मागे गडबड गोंधळ, सापडल्या नाही पेट्या. स्टेज मागे गडबड गोंधळ, सापडल्या नाही पेट्या. वाट बघत महाराज म्हणाले, पायीच जाऊया बेटा. औरंगजेबच्या आवाजाने स्टेज हादरला सारा. औरंगजेबच्या आवाजाने स्टेज हादरला सारा. उठल्यावर त्याला कळाले सुटला आपला नाडा. थर्माकोलच्या ढाली तुटल्या, थर्माकोलच्या ढाली तुटल्या, मोडल्या त्या तलवारी. थर्माकोलच्या ढाली तुटल्या, मोडल्या त्या तलवारी. मुलांची ही गंमत बघून मजाच आली भारी. मुलांची ही गंमत बघून मजाच आली भारी. धन्यवाद. Childhood is one of the best stages of life for every human being. It is full of innocence, full of life, and fun at its peak. World becomes small if we start defining childhood. I would just like to say that childhood is the happiest time of person's life, and it is said that childhood is one such thing we cannot buy, and we realize it only when we grow old. Looking at you, we relive our childhood. Your energetic presence in the school energizes us. The school is missing you more than you do. Now, Ashwini ma'am will express your feelings in her words through a poem. Hello children. Do you know, we teachers also, we get to learn so many new things from you. We are amazed by your tech savviness, the different talents that you have, your presence of mind, your enthusiasm, your honesty in exams, your patience, your sense of humor, and the most important thing, the ease with which you have got adapted to the new things and this new situation. It's really worth appreciating, children. So, on account of Children's Day, here is a poem for you with your perspective. Early in the morning, we miss the rush and hustle, especially PT sir and his whistle. We also miss the chit-chat in the bus,
the noise that we make, and the teacher saying, "Hush!" The morning assemblies on the huge playground. With a strong bond to school we are bound. Playing and fighting, sharing tiffin with a friend, and wishing that the day would never end. We have adapted to the new normal, but everything seems to be so formal. We are children, we are easy to mold. For that they say we have a heart of gold. In the new normal, we study, we play. Don't you worry, we'll find out a way. We know this is necessary for our survival. We are gathering the strength for our revival. School and me are just parting for a while. School and me are just parting for a while. As we both know well, we will come back with a smile. As we both know well, we will come back with a smile. In this journey of life, you will meet people who will make you alive, inspire, and encourage you. So today, Sabita ma'am is going to present an inspirational story on Nobel Prize winner Dr. Kailash Satyarthi. I never go to temples, but when I see a child, I see God in them. These beautiful lines are said by Dr. Kailash Satyarthi, a child rights activist and winner of the Nobel Peace Prize, who has devoted his entire life for the welfare and upliftment of the poor children in India and across the world. Kailash Satyarthi is an Indian social reformer who campaigned against child labor in India and advocated the universal right to education. It is for this contribution he was awarded with the Nobel Peace Prize. Kailash Satyarthi was born in 1954 in Vidisha, a small town in Madhya Pradesh. He is the youngest among 4 brothers and a sister. His father was a retired police constable and his mother was an uneducated housewife, but with high moral values. It is because of the helping nature of his mother that inspired Kailash Satyarthi to do something good for the society. In his youth, he struggled a lot for studies because of poverty. Many a times in childhood, he has studied under the lamppost. In 1980, Satyarthi gave up his career as an electrical engineer and then founded the Bachpan Bachao Andolan. He led the global march against child labor. He has also served as a president of the Global Campaign for Education. Satyarthi has highlighted child labor as a human rights issue. He also linked the movement of child labor and efforts for achieving education for all. He established Goodweave International, that is a system of manufacturing rugs without the use of child labor in South Asia. Satyarthi has been a member of a UNESCO body, Global Partnership for Education. He had served on the board and committee of several international organizations like Center for Victims of Torture, International Labor Rights Fund, and the International Cocoa Foundation. He brought child labor and slavery as an agenda for the United Nations Sustainable Development Goals. Kailash Satyarthi and his team at Bachpan Bachao Andolan, they have liberated more than 81,000 children from child labor, slavery, and trafficking. This movement became the largest movement on behalf of the exploited children. It is because of this movement he also received many a times death threats and was brutally beaten by the mafia, those who are behind this child trafficking. In 1998, Satyarthi led the global march against the child labor. It is an 80,000 kilometer long march across 103 countries.
In 2017, India Times listed Satyarthi as one of the 11 human rights activists whose life mission is to provide others with a dignified life. Few of his organizations, Bachpan Bachao Andolan, Kailash Satyarthi Children's Foundation, that spread awareness and advocates for beneficial policies for the children's rights, Global Campaign for Education. Satyarthi has also bagged several prize awards and honors. In 1995, he received the award, the Robert F. Kennedy Human Rights Award. In 2014, he received the prestigious Nobel Peace Prize. In 2017, his name was registered in the Guinness Book of World Records for largest child safeguarding lesson. Children, everyone has to do a bit towards the society and country as a whole. You have the power to bring a change in the world. So imagine, believe, and achieve. Children, the online classes have become a reality during this pandemic situation. You all are trying to adapt to this new way of learning. But the fact that you all are missing the school and your friends cannot be denied. With this theme, Mrs. Sarabjit Kaur will present your feelings through a poem, Hum Panchi Unmukt Gagan Ke, in a unique style. हेलो बच्चों, आज मैं आपके मन के भावों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आशा है कि शायद वो जो मैं बताने वाली हूँ कविता में वो आपको पसंद आएगा। तो मेरी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, घर पर यूं ना उड़ पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, घर पर यूं ना उड़ पाएंगे। ऑनलाइन और गूगल क्लासेस कर कर के थक जाएंगे। अब देखे टीचर सीधे स्क्रीन पर, अब देखे टीचर सीधे स्क्रीन पर, तो लगे कि टीचर की नज़र है हम पर और दूजा माँ बिल्कुल निकट खड़ी है। तो यूँ लगे कि ये कैसी आई घड़ी है। जब पंख दिए हैं तो उड़ने दो, जब पंख उड़े दिए हैं तो उड़ने दो। यह बचपन की खास घड़ी है, पर यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाई की मुसीबत गले पड़ी है। यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाई की मुसीबत गले पड़ी है। हम दोस्तों के संग रहने वाले, हम दोस्तों के संग रहने वाले, संग संग टिफ़िन और शैतानी करने वाले कर देते थे टीचर को पागल। एक चिल्लाता था इस कोने में तो दूसरा उस कोने में कोलाहल। अब एक और मम्मी, अब एक और मम्मी और एक और टीचर है। नज़रबंद हम यूं ना रह पाएंगे, नज़रबंद हम यूं ना रह पाएंगे। जो कहते आए थे अब तक वो सारे झूठ पकड़े जाएंगे। जो कहते आए थे अब तक वो सारे झूठ पकड़े जाएंगे। माँ क्या कहती है? यह टीचर तो अच्छा पढ़ाती है, यह टीचर तो अच्छा पढ़ाती है। तुम बेफिजूल की बातें थे करते, सुनते नहीं एक मिनट भी। ध्यान से सारे जहां की बातें तुम करते, सुनते नहीं ध्यान से तुम सारे यहाँ की बातें तुम करते। अभी मम्मी ही क्या और भी कहती हैं दोस्तों के बारे में। हाँ, यह है तो यह है तुम्हारा दोस्त वो पक्का, जिसकी तारीफ दिन भर थे तुम करते। अब मैं समझी इसे देखकर कि पढ़ाई में तुम क्यों जा रहे पिछड़ते। अब आप लोग क्या कहते हो? लिंक ना दे हमें ऑनलाइन की, लिंक ना दे हमें ऑनलाइन की और गूगल की। चाहे वाईफाई कटवा दें, चाहे वाईफाई कटवा दें,
जब बचपन दिया है तो जीने दे, जब बचपन दिया है तो जीने दे। प्रिंसिपल मैम, पांसे मैम, प्लीज स्कूल खुलवा दें, प्लीज स्कूल खुलवा दें। मोदी जी स्कूल खुलवा दें, स्कूल खुलवा दें। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हो, हो, हो। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम।